All right. So I think we are on air now. Yes, Welcome sir. to this podcast of magnetism. Yes, sir. मतलब it'll ensure you sleep well today. Hmm. Yes, रात sir. को फिजिक्स पढ़ो सो जाओ बेहोश होके. Actually, I had a sleep problem, so one of my relative came to my house. अच्छा. कहता है वो प्रॉब्लम ये है कि जिससे लोगों को नींद आती है यू टीच दैट. तो हाउ विल यू स्लीप? You can make others sleep, but you can't sleep because हाँ. you have the Yes, sir. medicine. मतलब मैं वाकई में बताऊं, if somebody has insomnia, you give Hmm. them the NCERT physics book, ऐसे रात को सिर्फ इसको पढ़ना है, समझ आए ना, इसको पढ़ना है बैठ के. Yes, थोड़ी sir. देर में उस कमरे से हाथी के वो नहीं आए अगर. स्नोरिंग होती है ना जो, Yes, sir. लाउड स्नोरिंग आ रही होगी. दिस इज द पावर ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स. Yes, sir. ये बिल्कुल. हालत है भाई. मैं कहता हूँ कि मुझे मुझे तो आती नहीं उससे नींद, मैं तो जाग जाता हूँ उससे. कहता Hmm. है भाई यही तो पंगा है सिर्फ. इट इज Yes, जस्ट sir. रिवर्स इन योर बिल्कुल. केस. कॉमेडी शो टोटल. Hmm. बिल्कुल. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशंस. Hmm. What is magnetizing field? So if you have a magnetic material which generally is not magnetic to start with, but because of domain randomness, but ferromagnetic में domain एकदम arrange हो जाते हैं आराम से, right? So हाँ. if you pick up any magnetic material, dia, para, or ferro, and you place it in an external magnetic field, okay, you अच्छा. pick up any magnetic material and place it in an external magnetic field, Hmm. okay, and we know that domains will organize themselves and a magnetism will get induced in this material. So this magnetic field that has a capability to induce magnetism Hmm. in the magnetic material. Remember, I told you materials are dead on their own. I mean, they have nothing. They have hidden properties which get exposed upon they're getting exposed to the external magnetic field, जो Magnetic field. उनके डोमेन्स को सीधा कर देता है. तो फेरो बन जाते हैं. थोड़ा कम सीधा कर पाता है तो डाया. और Hmm. अगर रिपेलिंग वाला केस है, फर्स्ट केस, राइट, Yes, sir. रिपल्शन, slight attraction, and then very strong magnet gets created in ferro 3. Hmm. So that magnetic field, which is the external magnetic field, which has a capability to convert it into a magnet, will be called as a magnetizing field. अच्छा. ठीक है. Okay, so for example, in the case of a solenoid, mu naught Ni is the magnetic field inside the solenoid. Hmm. Okay, right. So it is produced by current, obviously. Yes, sir. Right? But the basic definition is any field which induces magnetism in others will be called as should induce. अब मैग्नेटिज्म का मतलब ये नहीं होता कि इट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव. यू हैव स्टडीड देयर इज अ केस ऑफ रिपल्शन, Hmm. right, बिल्कुल. which is paramagnetism. Feeble is so on and so forth. So when you hear the word magnetism, get over your class 8th knowledge of magnetism where we start believing वो चुंबक है तो वो अट्रैक्ट करेगा. Hmm. That is ferro. You can have ठीक है. 3 types of magnetism now, depending on how well you're able to arrange the domains. Hmm. Right? But any magnetizing field which is capable of inducing any type of magnetism in a material will be called as a magnetizing field. ठीक है, sir. That magnetic field, it should induce magnetism in other materials. Materials. And you know there are 3 types of materials available which are all set to become magnets of different types. Okay? ठीक है. Second, magnetic induction. No brainer. We have already done the concept of EMI. Okay, so let's talk about magnetic induction. The magnetic induction is when you have a situation जहाँ पे आप एक जैसे हमने पढ़ा था toroid, या we studied a state toroid which was a solenoid. तो toroid तो ring के around थी. So you have this ring and you wrap the wires like this. Okay, and ठीक है. this is your solenoid. Okay, straight toroid Hmm. is a solenoid. Now Yes, sir. um, so
if you have a magnetic field induced in them because of the current flowing them, so जैसे solenoid में this is the induced magnetic field, and so whatever is a magnetic field which is inside the magnetic material is the sum of external magnetizing field and the additional magnetic field produced by the magnetization of the material itself. तो आपने क्या करा बेसिकली, ये जो आपने टोरॉइड है इसको एक मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लपेट दिया. अच्छा. लोहा हो सकता है या पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, कोई भी हो, एंड इट इंड्यूसेस. तो जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमने पढ़ी लिया, इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, राइट. दूसरे को मैग्नेटाइज कर सकता है, एक्सटर्नल फील्ड का काम करता है, को सोलेनॉइड भी दे सकता है. और जो मटेरियल अंदर छुपा हुआ है, द मटेरियल विच इज द मटेरियल ऑफ ऑन विच द टोरॉइड इज रैप्ड, जिसके ऊपर टोरॉइड को लपेटा हुआ है, ये जो रिंग है, ओके, दिस रिंग, इस रिंग के ऊपर यू हैव रैप्ड दिस वायर लाइक अ कॉइल. सो दैट पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल विल हैव एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो मैग्नेटाइज हो गया ना, क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल है. आपने उसको टोरॉइड को करंट दिया, तो करंट आ गया टोरॉइड की वायर्स के अंदर. उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने जो मटेरियल है उसको भी मैग्नेटाइज कर दिया. अब दो मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आएंगे, एक विच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बी मैग्नेटाइजिंग विच इज बिकॉज ऑफ द करंट. The second one which will come is the induced one because of the material becoming a magnet now. So the material on which you wrapped the current carrying wire has also become a magnet. The sum of these two is known as the magnetic induction. ठीक है. ठीक है. So the total magnetic field inside a magnetic material is the sum of the magnetizing field, which is the field due to the current carrying conductor, and the additional magnetic field produced by the magnetization of the material, and is called as the magnetic induction. ठीक है. Let me just check because definition is not coming clearly. मुझे ऐसा लगता है जो वो magnetic material के अंदर जो induce हुआ है ना, that magnetic field should be called as magnetic induction. Why should you add the magnetizing field also on that? Should not. उसका तो काम था इंड्यूस करना, उसने उसे मैग्नेट बना दिया, तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो मैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस है ना, इंड्यूस करने का. तो इट शुड नॉट बी द सम. मेरे को ऐसा लगता है इट शुड बी जस्ट दिस. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. एंड द यूनिट्स आर वेबर, जो नॉर्मल होते हैं वही हैं. टेस्ला, जो इंड्यूस होगा वो भी टेस्ला में है, जिसने इंड्यूस करा वो भी टेस्ला है. Right, but let me just see whether is it the sum or is it just the induced part of it. Let's just check it. Just checking it, the exact definition. कई बार सिर्फ एक मार्कर आ जाता है डिफाइन, मतलब इसमें वो इससे ज्यादा डिटेल नहीं है. डेफिनेशन के आगे कुछ नहीं करना हमने. Magnetic induction versus magnetizing field. Let us see what is the difference between the two. मुझे लगता है इंडक्शन वाला पार्ट should be only induction. Why it should be called as so when a magnetic material is magnetized by placing it in a magnetic field, the resultant field inside the material is the sum of the field due to the magnetization of the material and the original magnetizing field. This resultant is called the magnetic induction or magnetic flux density. So it is the resultant, it is a sum. So you have to do the sum. ठीक है सर. जिसने इंड्यूस करा और जो इंड्यूस हुआ दोनों को जोड़ो.
इट विल गिव यू मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, आगे ठीक है सर। बेसिक ये पूछते हैं, डिफाइन डिफाइन 1 मार्क, राइट। थर्ड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक। रिपल्शन वाला केस डायामैग्नेटिक था, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो इंड्यूस होता है मैग्नेटिज्म, इफ यू रिमेंबर, डायामैग्नेटिक में रिपेलिंग मतलब उल्टा इंड्यूस हो जाता है। यस सर। जैसे फेरो में तो बहुत अच्छी अलाइनमेंट हो बहुत जाती अच्छा है, होता है। वो मिनिएचर मैग्नेट्स की जो डोमेन होते हैं, छोटे छोटे एरो, वो सारे अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल। और पैरा में वीक होता है और डाया में ऑपोजिट हो जाता है। बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, ये एग्जांपल थे इसके। यस सर। Okay, so we have done. Okay, fair enough. Okay, great. सही है. All right, so we have done magnetic induction. Now we're doing magnetizing field intensity. ठीक है, one more term. So why they ask? Because all of these are very close to each other. Magnetizing field, magnetic induction. तीसरा magnetic field intensity. So pain is, how do you remember all of this? यस सर। है ना, इसलिए पूछा जाता है बेसिकली। सो द एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसकी कैपेबिलिटी, you can have a magnetizing field, but there is a way to find its capability to magnetize a material. So the capability of a magnetizing field to magnetize a material is expressed by a vector. जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, एक तो उसकी अपनी वैल्यू है, जैसे कि ये लिखी थी हमने सोलेनॉइड के लिए, बट इसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो इफेक्टिव कितना है, असरदार, हाउ इफेक्टिव इज इट. So the capability of the magnetizing field to magnetize a material is expressed by a physical quantity called as magnetizing field intensity, which is given by H vector, is expressed as H vector, and is given actually by the magnetizing field divided by the permeability. Okay? Units are ampere per meter. Now look at this. पहले बोलता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड है B, और उसी वो दूसरों को मैग्नेटाइज कर सकता है. फिर बाद में बोलता है कि इट हैज अ कैपेबिलिटी टू मैग्नेटाइज. मैग्नेटाइजिंग फील्ड के पास एक कैपेबिलिटी है दूसरों को मैग्नेटाइज करने की, वो नापी जाती है B नॉट बाय म्यू नॉट से. इट्स कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. इफ यू थिंक अबाउट इट, ऑल ऑफ दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट. कि मतलब सुनने में सब, डजंट इट साउंड वेरी सिमिलर भाई. एक तरह बोल रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, फिर उसी की कैपेबिलिटी की बात हो रही है, राइट. स्लाइटली व्हाट शुड आई से, कंफ्यूजिंग. व्हाट वाज द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वन मोर पैरामीटर, राइट. किस लिए इंट्रोड्यूस कर दिया आपने भाई, जब यू वर गुड विद
B. So why did you Hmm. have all the time to introduce one more? Okay. Okay. Then there is another one. और इससे ज़्यादा डिटेल है नहीं हमारे कोर्स में एक्चुअली. Okay. Definition is the detail you need to do. Hmm. Okay. Fourth, intensity of magnetization. ठीक है. Hmm. Now when a magnetic material आपको आपने एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया और वो मैग्नेटाइज हो गया. अब आपने क्या करा, जो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ जिसमें डोमेन्स एक साइड अरेंज हो गए या ऑपोजिशनल हो गए या फीबल हो गए डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, व्हाट यू आर डूइंग इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट गेट्स जनरेटेड इन द मटेरियल. तो ये आपने कोई मटेरियल रखा हुआ था और आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो गया टोटल m. Hmm. सो कितना मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुआ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. अच्छा, ठीक है. ये मटेरियल के अंदर हुआ है, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया. सो m रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड इन द मैग्नेटिक मटेरियल. Per Hmm. unit volume basis, it is represented by capital M and is given by m by v. ठीक है. ठीक है. Yes, sir. All right. For a solenoid, what is the value of m? The value of m is given by m upon volume of a solenoid is equal to, for a solenoid, the magnetic moment, which is the product of q into 2l, if you remember, हाँ. right, is written as n I m multiplied by a divided by a is equal to n I m. So you have to remember कि अगर आपको कोई मैग्नेट दे रखा है मटेरियल टाइप का, उसमें जो मैग्नेटाइजेशन जो आप इंड्यूस करते हो दूसरे के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. ठीक है. इफ आई टेल यू देयर इज अ मटेरियल, उसके अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया और द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज सम 2 मीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब. So magnetic movement developed in that magnetic material divided by the volume will give you the intensity of magnetization. But if they ask you what is a magnetization associated with a solenoid, okay, so you will write it like this. ये जो formula दिख रहा है, number of turns per unit length multiplied by the current flowing through the solenoid will tell you how much magnetic movement will get generated per unit volume. ठीक है. So A gets cancelled per unit volume, right? So B, और जो B है आपका, जो मैग्नेटिक फील्ड है, that is equal to mu naught M. ठीक है, सर. Now there is no derivation in our scope, but still you have to memorize all of them. हमारे कोर्स में there is no derivation associated with this. We have a definition, which is, so formula number 1, formula number 2 for a solenoid, and then formula number 3. ठीक है. This B is the magnetizing, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है सोलेनॉइड के अंदर बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग, म्यू एन आई ऊपर लिखा था मैंने. Yes, sir. Bm is the magnetizing field and this is the, so if you are given the magnetic moment generated by the solenoid is so much and you know the medium, you can find the magnetizing field. So be very careful. We will do some practice on this so that you will get comfortable. The confusion is one, the syllabus does not have great detail of what all these means physically, and then all the words are very similar. मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन,
magnetic field intensity of magnetization. So it takes time to digest this. Acha, intensity is related to the volume and the magnetic movement generated. So magnetic movement generated per unit volume is the intensity. ठीक है. Okay, let's move to the next. Okay, so if you see so remember, we are not doing very long details of ये आ कहाँ से रहे हैं formulae. Dada, we are not applying too much on this, right? We can do it, but it's not in our syllabus. We have to know the definitions and the definition formula only. Derivations, physical significance, etc. is not to be Not to be done. done. कर सकते हैं, but unnecessarily आएगा नहीं, फायदा नहीं है पूछने का. Yes. Okay, so let's talk about a bar magnet. So the topic we are still studying is M, which is the intensity of magnetization. So intensity of a magnetization for a bar magnet M is given by the pole strength divided by the per unit cross section area. So A is the cross section area of the bar magnet, जो ये होगा. बार मैग्नेट को काटो तो कैसे नजर आएगा सामने से. ठीक. This is pole strength. This is the cross sectional area of the material. How we got it, etc., etc. Nothing, not to worry. So the intensity of magnetization for a bar magnet, दो बेसिक डेफिनेशन यही होती है सबकी. तो सोलेनॉइड की देखो क्या आई है. सोलेनॉइड के केस में ये आई है, नंबर ऑफ टर्न्स per unit length into the current flowing through the solenoid. बार मैग्नेट, और एक फॉर्मूला ये भी आ गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को लिंक करने वाला. फिर एक और फॉर्मूला आ गया, you're defining M for a bar magnet, pole strength divided by the cross sectional area. So because there is no reasoning and not much of a physical significance, it's difficult to remember and understand this. यूज क्या होता है इसका, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, ग्राफ क्या होते हैं, कुछ नहीं पता. तो थोड़ा सा इट इज बिट ऑकवर्ड टू स्टडी ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. Alright, let me move to the next one. पांच नंबर का टोटल होता है, so I'm not going in huge details. Yes. Okay. This is okay. Let's move to the okay. We also studied that इधर पढ़ा था हमने, I think when we studied magnetic induction. So one point we need to know is that the total is right, the magnetizing field जो इंड्यूस करता है मैग्नेटिज्म दूसरों में, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये दोनों को ऐड करो तो यू गेट द मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? एंड आई रोट इट लाइक दिस. रिमेंबर दिस टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन बी रिटन एज, तो हमने सी दीज टू फॉर्मूलाज. One is the magnetic field intensity H. Right? Now let me write a formula of magnetic induction, which is the sum of the magnetizing field जो बाहर का फील्ड है और वो वाला फील्ड जो इंड्यूस हुआ है. ओके, जो फील्ड इंड्यूस हुआ है उसको लिखते हैं BM, जो हमने अभी नीचे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में लिखा भी था, ये रहा, म्यू नॉट M, राइट? So B naught plus mu naught M. And what is B naught equal to? It is equal to mu naught H. Look at this formula.
magnetize उसकी capability H is B naught can be written as mu naught into H. So mu naught H plus mu naught M is B naught. Sorry, this is a total magnetic induced field. The sum of the uh, B naught, which is the applied magnetizing field, and the induced part. So it is equal to mu naught H plus M. So the induced magnetic, the total magnetic induction is this. Now we've started linking all the formulas. मतलब जो जितनी definition है, they are getting linked to each other. You can see the magnetic induction is the sum of applied magnetic field and induced magnetic field. So this induced magnetic field हमने नीचे लिख लिया था. और second definition में also we used B naught can be written as mu naught into H. And I have substituted it here. पहले नहीं substitute करा क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि we just wrote these two terms, that's all. Induced का बाद में मालूम चला था this is the induced part. And this is the applied magnetic field, right? Correct. First में the applied magnetic field. So magnetizing field is actually your B naught. Okay. So we started with B naught. Then we said the total magnetic field, however, is going to be the sum of the magnetizing field and the induced field. दोनों को sum लिया, छोड़ दिया वहाँ पे sum को. उसके बाद we went to the capability of the magnetizing field, and that capability was defined by H vector P B naught upon mu naught. Then we went to the material itself and said, okay, how much magnetic movement actually got generated because of the external effect. जब कोई भी चीज मैग्नेट बन जाती है तो फाइनली तो उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है. तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ रहा है तो वो हमने निकाल लिया पर यूनिट वॉल्यूम बेसिस पे. Then we used this and then we used this and substituted, and we use this also B naught. तो मैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फॉर्मूला है जो B naught अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस दोनों को लिंक करता है. अच्छा, ये वाला जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकंड से मैं लेके आ गया H की टर्म्स में, म्यू नॉट H, ये वाला. यस सर. ये और जो मेरा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं लास्ट डेफिनेशन से ले आया, म्यू नॉट M. ये मटेरियल के अंदर इंड्यूस हुआ है बाय वर्च्यू ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट. इन दोनों को मैंने ऐड करके मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला निकाल लिया, which is the sum of the magnetizing field plus the induced magnetic field. It is given by this formula. So very importantly, if you have to write all the formulas, so first of all you will apply a magnetic field B0 and you will call it a magnetizing field. किसी material के ऊपर you will apply this. You will apply B naught on a material. ठीक है? That material will have then two magnetic fields inside it. One is B naught. The second field it will have is the induced magnetic field. Then you will say whatever field I applied has a capability called as intensity, the magnetizing field intensity, H vector, and I will write it as B naught upon mu naught. Okay. This is the property of the field, the power of field. And then you will say, okay, whatever material had induced magnetic field, उस material के ऊपर जाते हैं, and we will define a term which is M, the magnetization of that material, called as intensity of magnetization, M. And we will say, okay, how is it linked to the applied magnetic field? We will write the term as that the B induced, ये वाला part, ये मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट जो जनरेट हो गया पर यूनिट वॉल्यूम बेसिस के अंदर, वो बी इंड्यूस्ड की टर्म्स में कैसे लिखना है हमें? वी विल राइट इट एज इक्वल टू म्यू बी नॉट which was applied, sorry, induced will be written as mu naught into M. So while the applied magnetic field can be written as B naught is equal to mu naught H,
the induced magnetic field can be written in terms of the induced intensity of magnetization. जो मूवमेंट वाला है, ये मूवमेंट से लेंगे, जो मूवमेंट इंड्यूस हुआ है। तो ये हमें मालूम चल गया कि ये प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड होती है एच वेक्टर। एक फॉर्मूला बी नॉट ये है और बी इंड्यूस्ड का ये है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, बी नॉट की जगह लिखा पहले म्यू नॉट एच और बी इंड्यूस्ड की जगह लिखा म्यू नॉट एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। Okay. Just a story. Apply this field, induce this much in the magnetic material, then define a property of the field called as its magnetizing field intensity. So this is the magnetizing field intensity. And this is the intensity of, देखो दोनों में वर्ड है intensity. Yes, अब this is what has to be memorized then. Be very careful. Last minute preparation will mean you will not be able to memorize it. But if you write it down with your own hands, याद रहेगा फिर ये बिल्कुल सेम दिखेगा जहां भी wherever you see it. The intensity of magnetization. This was the magnetizing field. This total is the magnetic induction. ठीक है? ठीक है sir. You may get some numericals on it where you may have to use this one, but if numerical में लिखा हो given the magnetic induction is so and so, given the intensity of magnetic, calculate the this. So you will have to know all these linkages कि आपस में इनका link कैसे बैठता है. हो सकता है पहले आपको m निकालना पड़ जाए using this formula. जैसे कि हमने बार मैग्नेट के लिए पढ़ा था, the m it may be a bar magnet and you may have to say okay pole strength divided by the cross sectional area. So you know कि बार मैग्नेट का तो I am keeping in my pocket. The bar magnet's intensity of magnetization is pole strength divided by cross section of the bar magnet. ठीक है? उसी तरह there may be a solenoid in picture now. And for a solenoid, if you have to write the same equation, it may be a bit different. It may be N into Im. ठीक है. तो फिर तो ये यूज करना पड़ेगा m यहाँ पे. So just be very careful in the question. जब numerical practice करेंगे, be alert. किस कौन सी मटेरियल, मतलब इज इट सम बार मैग्नेट, इज इट सम अदर, कोई कुछ भी, इज इट अ सोलेनॉइड, व्हाट इज इट दैट इज गेटिंग द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. एच और एच एम बी, ये चार चीजें आ रही हैं कुल मिला के, एच एम एंड बी, एंड ऑफ कोर्स द मीडियम बी, म्यू नॉट, सॉरी, permeability. Right, so the variables you will play around will be, one is the starting point, which is the magnetizing field, then the property of that field called as H, and then inside the material M is playing its role. Magnetic moment per unit volume. And then you will link all of them. You say, okay, the total field which is inside the magnetic material is given by mu naught H plus M. Total B induced. Sum of B naught plus B induced. The resultant of these two will be called as the magnetic induction. तो ये B naught, H और M, ये तीनों को you should know how to manipulate them. And manipulate as in use them and you understand their definition. हो सकता है एक छुपा हुआ दे दें. They may not give you an M directly. They may give you this and this. And then they expect you कि पहले M निकालो. And then they may give you B naught. And then they may expect that you know how to use this formula to calculate the H. Only then you will be able to apply this formula, right? If you know H and M, only then you will be able to calculate the total field inside the magnetic material. नहीं तो निकलेगा कैसे? ठीक है. Not very clear because of lack of theoretical perspective, but इतना ही है. That's all. You don't have anything more than this. ठीक है? Yes sir. Let's move on to the
Okay, let's move to the next topic. The next topic is, by the way, called as permeability, which we have already done many number times. जो basically tells you कोई मटेरियल है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना पेनिट्रेट हो सकता है आसानी से, राइट? तो जो प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, जैसे इन द जूनियर क्लासेस यू स्टडी प्रॉपर्टीज लाइक इलास्टिसिटी, दोज थिंग्स। बर्तन बनाने में आसानी होती है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तार बनाने में आसानी, some materials are like that which exhibit those properties. Yes, sir. Similarly, some properties are magnetic in nature, and the most important one is the magnetic permeability. Okay, permeability. So permeability, say you can get a hint. It is all about permeation. So it is the extent to which the magnetic field can be penetrated, can go through the material. Extent to which a material can be penetrated. Okay. और जैसे दीवार में सीलन आ जाती है, हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, मतलब ऑस्मोसिस पढ़ा होगा कभी, परमिएबिलिटी, हाँ, पढ़ा। पानी पास हो जाता है उसके थ्रू, राइट? सो इट टेल्स यू अबाउट हाउ मच permeability is there. So permeability of the material, permeability of the material, ठीक है। right? And how do you define it? It actually is defined like this. Now this is again a basic definition, remember. Okay. Mu is given by the ratio of the magnetic field and its intensity. तो अगर मैं आपको एक ग्राफ दे दूं B versus H का, right? It's a straight line. It's constant, right? The permeability of the medium is fixed. They can give you a graph like this and say, okay, what medium are we referring to? So you'll say, okay, I'll find the slope of this. Na? Take a point and say, okay, tan theta is equal to x2 minus x1 upon y2 minus y1. Y1. So that will give me mu of the medium. Right? Okay, now, so generally what happens is we compare the permeabilities with the vacuum, and therefore whenever we write mu naught, we are actually saying कि vacuum कितना allow करता है magnetic field को permeate करने के लिए, mu naught. This is the magnetic permeability of the vacuum. मैं ही पता ही होगा, you know this. Magnetic permeability of vacuum. And then the next term we study in this, which is the sixth term, is the relative permeability. Now, what about other materials? अगर vacuum का mu naught है, what about other materials? So that is relative to vacuum. Vacuum से कितने गुना? Okay. The way to calculate relative permeability is the permeability of the medium divided by the permeability of the vacuum ratio. Something like epsilon. Yes, sir. Or sorry, dielectric constant K. वो भी relative होता है ना, dielectric. Epsilon R, sorry, epsilon R is equal to क्या लिखते हैं, K. Permittivity of the medium divided by the permittivity of the vacuum. Vacuum is the relative permittivity or the dielectric. ठीक है, तो ये mu r is equal to mu upon mu naught. It will give you, so mu naught incidentally as a for vacuum is given to be 1, but for air it is slightly higher, 1.1 2 3 4 5 6 4. This is for air. This is for vacuum. Okay. You can see air का थोड़ा सा ज़्यादा है. And sometimes iron, for example, is highly permeable. Iron will welcome magnetic field to pass through it. It is 1,000 times as permeable as vacuum. बड़े आराम से magnetic field iron के through it passes. ठीक है. Yeah.
Now let's talk about the relationship between too much, right? Art terms, Yes, sir. formulae. So it Hmm. so it takes time to absorb this. इसको I Hmm. can cover a lot of stuff, but जब तक ये समझ नहीं आया, then you will get stuck because when I talk about paramagnetic material, then I'm going to say paramagnetic material has this. Then you will say, अच्छा मुझे तो definition याद नहीं आ रही, क्या मतलब होता है इसका? So Hmm. you have to develop command over these terminologies which you've just studied. Last one Okay. is again a very okay. So we already know that B is the magnetic induction, which is the induced magnetic field inside a material, is given by mu naught H Hmm. plus M. This we already know, Yes. and now we also know that B and we हमने पहले भी use कर ही लिया था ऊपर H is Hmm. equal to B upon mu, right? So this we already knew this, and we've derived this formula with the help of knowledge of M and H definition. So if you see this, I write B as mu H. Hmm. तो ये B induced है, right? Remember, right ठीक side है. पे mu not H जो था, that was the uh, B naught Hmm. magnetizing field, और left side पे जो मैं mu H लिख रहा हूँ, that is the total magnetic field. उसको ठीक लिख है. दिया मैंने mu times H. कोई मीडियम यूज कर रहे हैं अब हम, राइट? वी आर यूजिंग अ मटेरियल जिसको हमने मैग्नेटाइज करा था, उसका जो परमेबिलिटी है, दैट इज म्यू. Hmm. तो मैंने उसको H से मल्टीप्लाई करा, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M, and what I get is mu, which is the permeability of that medium. I am expressing it as mu naught H को नीचे ला रहा हूं मैं, 1 plus M by H. ठीक है. Or we can say mu is equal to mu naught 1 plus xm. So you remember we said such a material, diamagnetic material, has negative and weak susceptibility. हाँ, पता है. पढ़ा था ना हमने शुरू में. हाँ. ये आ गई susceptibility की definition. So this is this term. So mu upon mu. Okay, let's continue. First of all, m by h जो मैग्नेटाइजेशन हुई मटेरियल की, intensity of magnetization divided by the property of that field called as the magnetic intensity is known as susceptibility. Hmm. And let's take mu naught here. So mu upon mu naught is equal to 1 plus xm. So this term is the relative permeability of the material with respect to vacuum. So relative permeability अगर आपको दे रखी हो किसी मीडियम की, या susceptibility दे रखी हो, तो उसमें 1 ऐड कर दो, you will get the relative permeability of that medium also. ठीक है. This term, so let's articulate it nicely. Okay, let's say you have a a magnetic material which exhibits this type of chart. Hmm. So B versus H is a linear. So because it shows B versus H to be a straight line, which means mu is fixed for the material, we will say the magnetic material is linear magnetic material. Such a material will be called as a linear magnetic material. Hmm. This linear magnetic material is showing a BH curve, which is a straight line. Hmm. And we have written B by H is equal to mu. So I told you mu is equal to B by H is equal to tan theta, the slope of the curve. So if it is fixed, constant, it's a linear, it's a straight line. So some materials may not give you this. ठीक है. Okay? Mu may vary inside them. So this is a material with fixed permeability. And now what is happening is they are being subjected to a field which is B naught, Hmm. right? Yes, sir. And sorry, they are being exposed to B naught. The B naught has a power called as magnetizing intensity.
That magnetizing field intensity is the one that actually acts on the material and develops magnetic movement inside it. The intensity of magnetization, that movement is per unit volume basis. So the field, the field in which the material is kept is this, and the property of the field which helps it generate magnetic movement in other material is known as this magnetizing field intensity. That magnetizing field intensity makes other materials as a magnet and generates magnetic movement in them. And that intensity of magnetization is M, magnetic movement per unit volume. And therefore, the material sees two fields inside it. One, the applied magnetizing field, and the second field it sees is the induced magnetic field because of capital M. मतलब M अगर है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो आपको आपके अंदर इंड्यूस कर दिया गया मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस H. तो द स्टोरी आई होप इज क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज हैपनिंग. एक फील्ड लगा, उस फील्ड के पास, वो फील्ड खुद नहीं पैदा करता, दूसरे में मैग्नेटिज्म, उस फील्ड की प्रॉपर्टी डिफाइन करी जाती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हाउ पावरफुल इज इट. सो दैट इज H, which is B naught upon mu हमारे केस में. ठीक है. ऊपर लिखा था हमने, और ये मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देता है, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है. वो पर यूनिट वॉल्यूम बेसिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाता है. और टोटल अब मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है और एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी है. उसकी वैल्यू ये होती है, और उसके अंदर वी आर जस्ट राइटिंग B. द टोटल मैग्नेटिक फील्ड is now being written in terms of the permeability of the material. पहले वो हम लिख रहे थे applied magnetic field mu naught H. हम मान के चलते हैं कि the total magnetic field which is available can also be written as mu naught H. Mu H, not mu naught H, क्योंकि mu naught H is reserved only for B naught. ये total है, induced. B naught plus B induced. We write it equal to mu H. Material का mu ले लिया और take this H down. So M by H is known as susceptibility. We will define it. What is susceptibility? And so mu naught को नीचे लाया, mu R is equal to mu. So this formula is also a very important formula for you. So it has something now you were studying. So question can be derive an expression that links magnetic permeability and magnetic susceptibility. Derive an expression that links magnetic permeability, relative magnetic permeability, because this is mu R. This is relative magnetic permeability. Link this and susceptibility. This is the derivation. Starts with this. Yes. And then left hand side, write it as mu H. Then M by H is, say it's a susceptibility. जब ये सब समझ में आ जाती हैं टर्म्स, समझ मतलब इतनी समझ चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए नहीं हमको. Then you actually start studying materials. Broad level पे domain theory के point of view से कि domains get aligned very nicely, very strong magnetization happens for, but then the words will come that there was a magnetizing field, it resulted in large amount of magnetic movement inside the material. So you know, ये तो ferromagnetic material है, अच्छा magnet बन गया ये, right? So domain theory is clear, but you will see some terms coming up, graphs coming up, and you will use all what you have learned here, all the expressions coming from definitions only, being applied to individual materials. ये weak है susceptibility, this is have a strong susceptibility, you know, stuff like that. So you will realize that the material just does not have domain theory associated with it. It also exhibits some other things like all the terms you studied.
Yeah, so origin, definitely origin हमने पढ़ा था उस टाइम पे, that origin is domain theory, but there are certain things we still did not study. So I told you we will continue the discussion. हाँ Right? But एक बार chart, if I show you the chart, you will understand. It's there in NCERT. What are we referring to? हम्म, ठीक है. So I will not do more because I think ये काफी है. इसकी जो difficulty level is very low. Whatever difficulties, because we are not doing too much explanation of each one of them. हम्म, Right? We are not getting into that nitty gritty कि बहुत detail में जाके we are studying it. We're just doing a very ऊपर से, right? We're not getting into detail of it. And that is why yes. it makes it hard. Not that it is hard topic. इतनी magnetism है कि हमें definition level पे ही रखा हुआ है restrictive. So it's a huge theory of magnetism. हम्म, Let me just so let's say we studied अब बोलती susceptibilities m by h, हम्म, है ना? वो m by h लिख दिया, right? So it's a physical quantity that defines uh, how the material behaves in presence of an external magnetic field. हम्म, अगर कोई बोले why are you studying magnetic susceptor, पढ़ क्यों रहे हो? Why are you studying it? You will say, see, I will have any material somewhere or another exposed to an external magnetic field. हाँ So I must know how it behaves in the presence of a external magnetic field. हम्म, And therefore we study this property because because we have already, you see what we have done. We have said that m by h is susceptibility, हम्म, right? When you start doing the properties of the material, जब प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करेंगे ना इन क्वांटिटीज हाँ में जो हमने अभी पढ़ी हैं, व्हाट यू विल फाइंड इज, एंड मैंने पहले भी बताया था बट नाउ इट इज मोर सिग्निफिकेंट, दैट द ससेप्टेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हम्म, so you have will be very large as compared to one. हम्म, So ठीक with है. a very little effort of the power of the external magnetization field, you will be able to generate a lot of magnetic movement. थोड़े हम्म, से ही, तो फेरोमैग्नेटिक की यही तो बात होती है, थोड़ा सा ही हाँ आपने उसको चुंबक बनाया वो बन जाता है. यस. पावर कम चाहिए, थोड़ा सा ही दिया फील्ड बन गया. हम्म, तो बोलते हैं इसकी ससेप्टेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत कम ताकत से, कम एच से. एच प्रॉपर्टी है एक्सटर्नल फील्ड की, और हम्म, एम प्रॉपर्टी है मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की. तो आप एक्सटर्नल पावर से जो एच है, आप बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट कर लेते हो. सो पर यूनिट बेसिस, पर यूनिट पावर यू विच यूर अप्लाइंग, विच इज लाइक स्पेंडिंग वेरी लिटिल बट बाइंग अ लॉट. तो खर्चा आपका एच है जो यूज होता है दूसरे को मैग्नेट बनाने में. और हम्म, जब वो चीज मैग्नेट बन जाती है, व्हाट यू गेट इज एम आउट ऑफ दैट, राइट? लॉट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो भर जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट से. तो आपने खर्चा इतना करा है, एच मैग्नेटिक मूवमेंट से यू आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग एम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. अगर मैग्नेटिक फील्ड 1 होता, ये इंटेंसिटी 1 होती, तो कितना आप जनरेट कर सकते थे? एम बाय एच. हम्म, So the magnetization intensity you are able to achieve per unit volume, per unit basis of the magnetic field intensity is known as susceptibility. Higher it is, what it tells you, by spending very little h, ये बहुत छोटी वैल्यू है स्मॉल, हम्म, और ये बहुत बड़ा है, द रेशियो विल बी वेरी लार्ज, राइट? हाँ मान लो हमने 0.5 से 10 जनरेट कर लिया, तो 10 अपॉइंट 0.5, 100 आ गया ना. हम्म, 20, मतलब अगर आपने 1 से 1 अगर h लगाया, तो 20 टाइम्स आपको मिल गया m, 1:20 में. सो हाईली ठीक है. ससेप्टेबल मटेरियल, बड़े आराम से हाईली, अंग्रेजी में भी वर्ड होता है ससेप्टेबल, हम्म, इन्फ्लुएंस हो जाना. तो यू आर वेरी ससेप्टेबल. हम्म, और हम बोलते हैं कि द मटेरियल्स विच आर द डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट वेरी ससेप्टेबल. एक तो वीक है और फिर नेगेटिव भी है, हाँ है. उल्टा. सो हम्म, उनकी जो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो जो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो उल्टी डायरेक्शन में आ जाता है, एंड देयरफॉर देयर मैग्नेटाइज, द ससेप्टेबिलिटी दे एग्जिबिट इज इन दिस रेंज.
sorry, -1 to 0. So they are weak and negative susceptibility. पहले तो susceptible नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं नजर आती, जो भी नजर आती है वो उल्टी नजर आती है. पैरामैग्नेटिक वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, आप बहुत ताकत भी लगा लो कि खास आपको मिलने नहीं वाला. सो द रेशियो विल ऑलवेज between 0 and 1. So you apply maybe 20, you will get 19. So 19/20. वो नहीं होगा कि 20 का 400 मिल गया. No. 20 लगाओगे 19 मैग्नेटाइजेशन M मिलेगा. So ratio will be less than 1 always. Not very powerful. So susceptibility is being studied because we want to know the behavior of a material in the presence of an external magnetic field. वो करेगा क्या वहां पे? Will it become a magnet? तो फिर हो सकता है कई एप्लीकेशंस में मैग्नेट बनने से बेकार हो जाए. यू डोंट वांट इट टू बिकम अ, सो यू विल टेल वी नीड अ मटेरियल व्हिच शुड नॉट बिकम अ मैग्नेट. It should be, you know, weakly magnetized. We don't want too much magnetization to happen. Okay. So finally all this will culminate into classification of magnetic material. कि चलो हमने सब पढ़ लिया, करें क्या इसका? So we will use all of this in classifying material. So materials will exhibit different susceptibilities, for example. We have seen. They are showing M/H, which is different. Similarly, when you get into details of those materials, you will find that they exhibit different permeabilities. They exhibit different type of behavior on, you know, application of magnetization field and all of that. So we will study all of that. ससेप्टेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होता है मटेरियल को पढ़ने के लिए. एक किसी भी मटेरियल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है म्यू आर और एक्स एम, जिसका भी हमने रिलेशनशिप डिराइव भी करा ऊपर, 1 + XM, ये वाला, ये. पर ये आया कहां से? ऊपर से आया है सारा. What is happening at the microscopic level is the interplay of M, H, and B. And finally, all of this converts into this relative permeability and susceptibility linkage. वो उसके building blocks हैं. M, H, B naught, mu naught. Finally, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, म्यू आर XM को जो लिंक करता है. और मटेरियल के बारे में जब भी इफ यू रीड मैग्नेटिक, they only talk about susceptibility and relative permeability. इसकी permeability कितनी है, कितनी आसानी से ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने थ्रू जाने देगा और कितनी आसानी से ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा. Make sense? Yes, sir. So what we will do some numericals on this in the next class tomorrow, so that you get comfortable with these terms. पहचानने में थोड़ा न्यूमेरिकल पढ़ोगे ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये इंटेंसिटी थी या ये मैग्नेटाइजेशन क्या था. ये यूनिट से पता चल सकता है. हर एक का अपना अपना याद करने का मेथड है. यूनिट दिख गया तो पता चल गया कि ये क्या है. बट कईयों के यूनिट सेम हो सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट सेम है. So how do we distinguish which one is what? We will read them. We will see solenoid written, bar magnet written, so on and so forth. So I'm not proceeding now. I will not get into theory of para, ferro and all that. We will try and do some numericals on this topic first and understand it thoroughly. Okay? So I will ping you for a time which is post 3 p.m. Just please keep a watch on your Telegram. Okay. उसमें मेरा एक स्पेशल ट्यून लगा दो, बम का. ठीक है? Yes, sir.